शो पे भी कुछ नहीं किया, अभी सेमीफाइनल्स जाएगा, उसमें भी हगना चाहिए वो तो. एंड आउट ऑफ एवरीवन द मोस्ट नॉन डिजर्विंग पर्सन वाज हर्ष. Getting people's personal vulnerable side on camera was not right. आकृति को स्क्रीन टाइम चाहिए था, इसलिए आकृति ने शिवित को उड़ा दिया. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Krisha here and I'm back with a very controversial video where I am going to be sharing my views and my opinions on the show MTV Splitsvilla X5. I have a couple of questions that I have picked from here and there, and I'm going to be sharing my views and my opinions. The first question is my favorite contestant of Splitsvilla. If I have to pick one favorite pair of Splitsvilla, it would be Aniket and Tequila. I think they're very cute, and obviously they've been a couple before the show too, and they're very cute, they're very strong, nice, but okay, as a pair they're good. But if I have to pick one individually amongst the male contestants, I would pick Big Vijay. He's smart, he's nice, he's playing it really well, he's using his brains. शायद अगर वो थोड़ी brains उसने रोडीज में यूज़ कर ली होती तो शायद वो वहाँ पे अच्छा खेल लेता, बट कोई नहीं, वो वहाँ से सीख के आया. and obviously you learn from your mistakes, so he's playing it really well here in Splitsvilla. Female contestant, I'd never really liked anyone start में, but one girl, Kashish Kapoor, oh my god, that girl is so crazy. The way she talks, the way she carries herself, her personality, every single thing is on point. She's always taken a stand for herself, she's always spoken up when things are not right, and she's performed. She's just too good. I love her. I would want to have a personality like her. So I think yeah, it is Kashish. Next question is one pair that I always visualized or I wanted to see on the show. They're not a pair on the show, but I wished they were a pair. In my opinion, it would have been Jashwant and Kashish. I think people would agree that they would have made a really good and strong pair. I think from the beginning, Jashwant liked Kashish as well, and Kashish liked Jashwant as well. And I think since the beginning, I never thought Akriti and Jashwant would make it together, but I always pictured them together. And in that one episode where Kashish had to do tasks, and when she was flirting with Jash, it was so good. Like their chemistry, I swear to God, I don't know about the others, but I really saw it. Like I saw something in them. Jashwant as a personality, he's nice. I like him. He's not bad, but I feel he is better with a girl who's sassy and confident and has a very strong and dominating personality, rather than being with a girl who's cute and like bubbly and all. शो पे because he's with Akriti, उसकी अच्छी साइड दिख रही है, but कशिश ने भी काफ़ी बार बोला कि he has the bad side as well and he has that sexy side also. तो I think वो वाली साइड उसकी ज़्यादा बेटर है और वो उसकी कशिश के साथ दिखती है. तो my opinion is that. Next question, one non-deserving pair. हाँ, very easy, Harsh and Rushali. भाई in the whole season, tell me what has Harsh done by himself. Tell me one task where Harsh and Rushali have performed and won all by themselves. Zero. Starting से Harsh is sitting on the safe side. He's sitting as if he is the king and he's dominating the whole villa for no reason. और उसके जो puppets होते हैं like Addy, Shivit, Dave and all of these guys are following Harsh and playing Harsh's game. Harsh is playing the game. Y'all are playing Harsh's game. I think किसी ने तो बोला था कि हर्ष से पंगा लेके तो उसके बैड बुक्स में आएगा और वो उड़ाएगा. कुछ उड़ाता नहीं है, उसके इसमें दम ही नहीं है. The day he was on the unsafe side, उसकी फटी पड़ी थी वो बंदे की. And I'm not even kidding, उसके मुंह पे दिख रहा था. I think the previous 2 episodes,
The dome and the dome after the ticket to finale are two domes where Harsh hasn't spoken. Those were the 2-3 episodes जहाँ पे वो बंदा कुछ बोला ही नहीं है. That literally shows that he's done nothing in the show and he said everyone कि you don't do this, you don't do that, you don't. Really, like do something and then go on the show. दिग्विजय said कि तुम लोग ही पागल हो कि तुम लोगों ने हर्ष को 3 बार आइडल मैच के लिए भेजा है. वो ऐसे ही नहीं गया है, वो तो अपनी गेम खेल रहा है. सही बात है भाई, उसने कुछ नहीं किया आज तक. वो सिर्फ आइडल मैच बना है. उसको जब चांस मिला उसने शुभी के साथ वो आइडल मैच बना, फिर शुभी को नीचा दिखाया. उसको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आती. वो शुभी को नीचा दिखा ही नहीं सकता. वो ऋशाली को बोलता है कि डोमिनेटिंग दिस एंड दैट. वो एक टास्क वो दिन क्या हारा था, इतना रोया एंड आई वाज लाइक ब्रो इट्स जस्ट अ टास्क और तू हारा, तेरे बल पे हारा. जो दिन वो जीता वो दिन उसके पास पावर है उड़ाने की. क्यों जीता? अनिकेत डकीला थी उसके टीम में और पता नहीं शुभी की वजह से जीता था वो. शुभी भी तभी बहुत कुछ चीज़ें बोल सकती थी बट शुभी ने नहीं बोली. आई हैड अ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फर्स्ट वन दैट हु डिड नथिंग ऑन द शो. Clearly I answered it. It was Harsh. He clearly did nothing on the show and he's still there in the finals. I don't know how. I don't know what is the show production thinking. Obviously it's not gonna get hate from any of the people outside, from the audience and all. But what are you wanting through this? Respect. Okay, you're running a girl, which is fine. You got her. It's unfair. I think audience should see everyone and then analyze. And out of everyone, the most non-deserving person was Harsh. Next question. A pair who deserved to be there. Like who deserved to be in the finale. Aniket and Dakila. I think the saddest elimination was Aniket and Dakila's vote out. They had a chance to eliminate Lakshya and Shubhi. Though I'm not saying to eliminate Lakshya, I really like Lakshya. But in that moment of time, Aniket and Dicky deserved it. They have everything. They have love, they have brains, they have power. They've won so many tasks. And as Aniket said, इतनी बार उसने लोगों की हेल्प करी और लोगों को टास्क जितवाया है. बट कहीं ना कहीं उन लोगों को कभी वो मौका ही नहीं मिला सेफ साइड पे बैठने का. एंड आई थिंक a part of this was production's fault too. The day they became an ideal match, उन लोगों को वहाँ पे 5 मिनट बैठने दिया, 5 मिनट, और फिर वहाँ से हटा दिया. I feel really bad for the couple because they were a proper example of love. If they say this is a love show, Aniket and Dakila deserved it. But कहीं ना कहीं ये मेरा personal opinion है that show production does not favor North Eastern people. वो मैंने सुना भी है, काफ़ी सारे रूमर्स भी आए हैं. They don't prefer North Eastern people and because both of them were from the Northeast and just because they didn't know how to talk in Hindi that much and English, they had a communication gap doesn't mean that they did not deserve to be on the show. I think वो बहुत दूर तक आए थे, अपने बल पे आए थे. इतने बार परफॉर्म करने के बाद भी they never got any power. They never got any safe positions or anything. सब मिलता था Harsh Rushali, Harsh Shubhi. Next question. Is Oracle scripted? Of course, yaar. It's a reality show. Of course, the whole show is scripted. Chal, theek hai, there are parts. Obviously, the fights, the arguments, and dumping. There might be a point जहाँ पे वो चीज़ें scripted नहीं है. फाइट्स आर ऑब्वियसली नॉट स्क्रिप्टेड. अगर तुमको लड़ना है किसी से तो तुम्हें बोला नहीं जाएगा कि तुम इससे लड़ो. नहीं, लड़ना नेचुरली निकलता है एंड फाइट्स आर नॉट स्क्रिप्टेड. बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट आई हैव रेड, लाइक ऑल द रूमर्स एंड ऑल, डोम सेशन स्पेशली, आई थिंक द सिचुएशंस ऑफ देम डंपिंग समवन और समथिंग आर नॉट स्क्रिप्टेड फॉर टिल एन एक्सटेंट. एंड आफ्टर दैट वो जो बकवास करते हैं ना वो लोग, मिस्चिफ बॉक्स, पहले वो बुक ऑफ फॉर्चून होती थी, मिस्चिफ बॉक्स होता था, फिर एक सीजन में वो कार्ड्स थे, पता नहीं काफ़ी सारी वो चीज़ें होती है स्क्रिप्टेड चीज़ें. जब प्रोडक्शन को गेम बदलनी होती है और जब प्रोडक्शन को चाहिए होता है कुछ उनके हिसाब से हो, तो वो बीच में वो चीज़ें एलिमेंट्स आ जाती है ताकि दे स्क्रिप्ट द शो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देयर. तो अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने किसी को डंप किया XYZ बट उन लोगों ने चाहिए वो डंप हो, तो वो ऐसे वो
स्क्रिप्ट करेंगे वो चीज़, और वो मिस्टर बॉक्स को लेके आएंगे, फिर उसमें उसको बचाएंगे, फिर और ऐसे इसको डंप करेंगे कि वो स्क्रीन टाइम नहीं देता हो ज़्यादा, बिकॉज एट द एंड इट्स अ रियलिटी शो. जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम देता है, जो ज़्यादा कंटेंट देता है उनको, वो उनको ही रखेंगे ऑब्वियसली. और आई थिंक X5 इज़ द मोस्ट ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड सीजन, लाइक इट्स द मोस्ट प्रिडिक्टेड सीजन. तो वो चीज़ होती है कहीं ना कहीं कि सिचुएशन देख के आजू बाजू की चीज़ें स्क्रिप्ट होती है. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणविजय बेटर और तनुज? Ranvijay is OG and Ranvijay will always be everyone's favorite. I always watch Splitsvilla because of Ranvijay. Like, he's a very good host, and together Ranvijay Sunny. The season where he left, I don't know why he left, very shocking. But last season, Arjun was the host, and the most pathetic season so far was season 14. The worst season. He as a host, I am sorry, no offense to people who like Arjun Bijlani, but he as a host was very dull. उसने बोला भी नहीं कुछ, उसने कुछ किया ही नहीं. वो आधे टास्क में होता नहीं था. आधे टास्क में सिर्फ सनी होती है, आधे में अर्जुन होता है. As a pair, they were never together. And I used to be like, bro, this is so boring. Like, the host is only making it boring. I would not want to watch that season. And because of that, TRP वो सीज़न की इतनी गिर गई कि जो लोग, मतलब जो कंटेस्टेंट्स वो शो सीज़न पे आए थे, दे नेवर गॉट द लाइमलाइट. उन लोगों को लाइमलाइट ही नहीं मिली, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला वो सीज़न से. बट कंपेरेटिवली अर्जुन से तनुज बहुत बेटर है. लाइक, यू नो, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, पंच लाइन्स, बीइंग active, being energetic is something that Tanuj is doing it really well. Talking about Sunny, this season of Splitsvilla X5, क्या पंच लाइन्स मारी है ब्रो उसने. लाइक, ओ माई गॉड, सबके लिए उसने. आई हैव नेवर सीन हर टेलिंग अ कंटेस्टेंट गो, घर जाओ, चली जाओ यहाँ से, इफ़ यू नो यू नो. बट दैट मोमेंट वॉज एपिक. और इतना हंसी हो ना मैं. आई थिंक दिस सीजन सनी हैज़ ऑल्सो गॉटन एन इक्वल स्क्रीन टाइम and equal sassiness. So yeah. The next question is, who's going to be the winner? This time it's actually interesting. All the 5 couples, चल 5 नहीं 3, Naira Arbaz, Jashwant Akriti and Digvijay Kashish. वो at least these 3 couples are genuinely nice. बाकी 2 की मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों तो डिजर्व भी नहीं करते. But हाँ, these 3 are genuinely nice couples. तो it's going to be a really good finale. I really want Digvijay Kashish to win. Like, they both deserve to be together and deserve to win the show after everything that has happened with them on the show, especially Kashish. Oh my god, I mean, after what she went through in the show, I think she deserves it the most out of everyone. The most controversial question: why did Akriti dump Shivit? A lot of people had opinions on it, that she should have not dumped her and all. कहीं ना कहीं even I was under the impression that ऐसा क्या reason, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या शिवित ने नहीं किया कि you dumped your best friend's connection. Like, I think that was not necessary or something. Starting में मैं भी थी कि स्टैंड नहीं लेने से तुम किसी को डंप कर रहे हो. आई थिंक वो चीज़ क्लियर आउट हो सकती है. तो कहीं ना कहीं आई थॉट, बट फिर आफ्टर पीपल टॉकिंग अबाउट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड सीइंग द कंटेस्टेंट्स इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, स्मार्ट मूव आकृति, स्मार्ट मूव. वो स्मार्ट मूव था उसका. कशिश के इंटरव्यू में कशिश ने बोला था कि आकृति को स्क्रीन टाइम चाहिए था, इसलिए आकृति ने शिवित को उड़ा दिया ताकि वो बैक साइड आ जाए, सब उसको टारगेट करे और ऑडियंस से उसको सिंपैथी मिले. एंड इट वर्कड, इट जेन्युइनली वर्कड. एंड शी प्लेड हर कार्ड्स राइट. शी हैज़ गॉटन सिंपैथी फ्रॉम पीपल हु डिडंट लाइक हर. एंड आई वाज लाइक, गेम प्ले, दिस इज अ गेम प्ले. बट नाउ आई थिंक अबाउट इट, आई वाज लाइक, फेयर गेम. किसको डम करती वो? अगर उसने शिवित को डम किया, वो उसका गेम प्लान था. वो लोग कौन से क्लीन खेल रहे हैं. शिवित आया, ओ माय गॉड. उसके बाद भी प्रोडक्शन को लगा कि कितनी गलत चीज़ हो गई कि तुमने शिवित को कैसे डम किया, इसलिए शिवित फिर से आया. फिर से
कुछ ना करके फिर से आया, शो पे भी कुछ नहीं किया, अभी सेमीफाइनल्स जाएगा, उसमें भी हगना चाहिए वो तो. आई डोंट नो people if people will relate to me or something that when he came, like when he entered the show, he entered as if वो जीत चुका है. इतनी अकड़. पर्सनल चीज़ों की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये शो ही बहुत गलत वे में स्टार्ट हुआ था, just because the show wanted more views, more viewers, more TRP. They got people's personal stories on national television, bringing exile, making an exile, getting people's exes on the show and doing that courtroom episode and revealing people's personal secrets, getting people's personal vulnerable side on camera was not right. You're not doing love school, you're not doing anything here to get the lovers together. This is Splitsvilla. You've come here to move on. There are 20 people standing in front of you who have no idea about your personal relationship, who have no idea about your personal lives, you have no idea who you are. They've just met you on the show and they are going to decide on the basis of who's going to speak. They are going to be deciding कि जो बोला वो सही है. ये तो बात बहुत ही गलत है. आधी चीज़ें तो टीवी दिखाती भी नहीं है. मे बी वहाँ पे जब शूट कर रहे होगे तब बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई होगी, बट टीवी पे तो लोगों को नहीं दिखता है ना. टीवी पे दिखा शिवित और नायरा की स्टोरी में नायरा ने कुछ बोला, बट इन रियल लाइफ तो काफ़ी डिफरेंट हो गई वो चीज़. तो तुम 5 मिनट की क्लिप से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि नायरा गलत थी, शिवित राइट था? ये बहुत ही स्टूपिड लॉजिक और वो लोगों ने किया था. आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल. इफ दिस वाज स्प्लिट्सविला, दिस वुड हैव बीन only singles coming on the show, meeting new people, making bonds and winning the show. There was a situation where you could have judged. Example, Harsh, Shubhi and Roshali. I agree. Shubhi जब आई तब वो शॉक थी because उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बंदे के साथ है, which is right, breaking the girl code. And there was a very wrong thing that happened on the show, and where Shubhi had so much scope to turn the tables, to prove her point, to be the bad girl, to be the bad bitch. But Shubhi couldn't do that because she's a nice person. Her personality, वो वैसी personality नहीं कि वो झगड़ेगी, वो she like speak badly about anybody. She's very sweet and she's really nice. तो उसने छोड़ दिया. I think Roshali was wrong, वो जो उसने करा था. एंड जो भी निकलते निकलते भी बोल के गई कि उसको कभी नहीं चाहिए था. लाइक शी नेवर थॉट बैडली ऑफ रुशाली, विच इज़ ट्रू. शी जेन्युइनली नेवर थॉट. अगर उसको चाहिए था तो वो पहले निकाल देती रुशाली को. बट शी बीइंग शी इज़ अ नाइस पर्सन, तो उसने नहीं किया. तो या रुशाली आई थिंक वाज रॉन्ग. आई हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस टू गिव. लाइक इफ आई स्टार्ट रिव्यूइंग ईच एंड एवरी एपिसोड, मैं उसका एक एक एपिसोड की एक एक वीडियो बन सकती है. मेरे पास उतना कंटेंट है बोलने के लिए. बट आई थिंक आई हैव टू कट द वीडियो शॉर्ट हियर एंड आई हैव टू एंड द वीडियो हियर. Hope you like this video. If you genuinely watch Splitsvilla and if you're a big fan as me, I think you'll be able to relate to this video. And even if you don't watch Splitsvilla, guys, this is your sign to start watching it. It's a time pass show, yaar. Come on, life में कुछ तो time pass होना चाहिए ना. Obviously, there are people who will be saying that ew, so cringe and all. I don't think it's cringe. There's a lot of drama in that show. And मुझे देखना पसंद है because I like watching drama. Do subscribe to my channel and make sure you share this video with someone who really likes watching Splitsvilla so they can drop their views and opinions in the comment box below. Bye. See you all next time.